Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve question number 2, 3 and onwards of exercise 2.4. So let's see what question number 2 of this exercise says. So before we start, repeat after me. Rabbi Shahli, Sadri, Wayasirli, Amri, Wahlul, Uqdatam, Millisani, Yafkahu, Qawli. Rabbi Zidni Ilma. So question number 2 of exercise 2.4 says write the following as a single logarithm. हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में if you notice कि आपके पास यहाँ पे दो लोग गिवन है तो आपने इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना होगा. बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस I want to tell you some key fact which we will use to solve these questions. You must know the properties of the logarithm. Okay, the first one is called a product rule. Product means multiply, right? Product rule में आपके पास क्या होता है कि if two numbers are multiplying और यहाँ पे आपके पास log लिखा आ रहा हो बाहर तो ये किसके इक्वल होगा. आपने इस log को इंडिविजुअली इसके साथ सेपरेट करना होगा. You will write it like this: log a and log b, and this multiply sign will convert into the positive one. Okay, so this is the first rule which you need to memorize is the product rule of the logarithm. Okay, इसमें ये होगा कि अगर आपके पास log of a multiply b आ रहा है, a and b could be any integers. Okay, so you write the log with individual numbers and the multiply sign will change into the positive one. The second rule is called a quotient rule. So इसमें आपके पास क्या होता है कि if two numbers are dividing, so आप इसको कैसे लिखोगे. जस्ट लाइक द मल्टीप्लाई, आपने सबसे पहले log को डिवाइड करना है, सेपरेट करना है विद ईच नंबर, एंड देन दिस डिवाइड साइन विल चेंज इनटू अ नेगेटिव वन. ओके, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन से रिप्लेस हो जाएगा. सो और यू कैन memorize it like this कि यहाँ पे बार है तो बार का sign is like somehow similar to the negative one, so that's why we are replacing the negative sign. Okay, and the third rule is called a power rule. ओके, सो पावर रूल में आपके पास क्या होगा. इफ देयर इज अ log ऑफ एनी नंबर जिसकी कोई ना कोई यहाँ पे पावर गिवन होगी. लेट्स सपोज आपके पास नंबर 2 है और इसकी पावर 3 गिवन है. सो यू विल राइट इट लाइक दिस कि जो आपके पास पावर होगी इट ऑलवेज शिफ्ट बिफोर log. ओके, तो आप इसको लिखोगे 3 log 2. So these are basically the three main property which you will use to solve the question of 2.4 today. So अब आपने बस इसको याद रखना है. अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन होगी तो आपने उसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना होगा. अगर राइट हैंड साइड गिवन होगी तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने कन्वर्ट करना होगा. ओके, एंड बोथ वेज. एंड ऑल्सो must remember that if you take a log of 10, so it always be equal to 1. Okay, and the fifth fact would be if to take a log of 1, then it will be 0, and if we have a log with something base and value, if the base and the values are same over here, so the value will always be 1. Okay, like for example, what does it actually mean? If you see like something written like this, log base 2 and value is also 2, so you can replace it by 1, so it would be equal to 1. Okay, so just remember these key facts, and because we are going to use these to solve our questions for today. So now let's start question number 2, which says write the following as a single logarithm. Now see, if we talk about the first term, log से पहले आपके पास एक नंबर गिवन है इन अ फ्रैक्शन फॉर्म विच इज 1/2. और ये मैंने आपको क्या कहा था, log से पहले अगर कोई भी नंबर गिवन हो तो इट मीन्स वो इस वाले नंबर की पावर होगी. ठीक है, इट मीन्स 1/2 इज अ पावर ऑफ 25, राइट? सो वी आर यूजिंग एक्चुअली अ पावर रूल ओवर हियर, सो विल राइट इट लाइक दिस: log 25 पावर 1/2, राइट? प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, ये जो 2 है ये पावर है 3 की. सो विल यूज अगेन अ पावर रूल एंड विल राइट इट लाइक दिस: log 3 square, राइट? नाउ 25 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मे आई राइट इट लाइक दिस 5 square, राइट? एंड 1/2 प्लस log 3 square is basically 9. Now these two and these two will cancel out each other and we left with log 5 plus log 9, right? Now there is a positive sign over here, so we can use a product rule. So we have a right hand side of a product rule and we want to convert it to the left hand side. So we'll write it like this: log को हमने एक दफा लिखना है, we are using the product rule over here, and 5 and 9, and this positive sign will change into the multiply sign. So log 5 multiplied by 9, and log 5 multiplied 9 equals to what? Log 5 nines are 45. That's it. This is your answer, right? Okay, cool. Now
see part 2, we have log 9 minus log 3, right? So log 9 will remain as it is minus log 1 by 3. So this is actually our question. So we have a negative sign over here. For the negative sign, we can use a quotient rule, right? See on your left hand side, here is your quotient rule. It look like the right hand side of your quotient rule, and you want to, you must have to change it on the just like your left hand side. So you will write it like this: log एक दफा, and the first value would be your numerator, and the second value will become your denominator or divide का symbol, right? Now these three will multiply. Log 9 multiplied by 3 divided by 1, and log 9 multiplied by 3 is 27. 27 divided by 1 is 27. So this is your answer for part 2. Okay. Okay, now let's see part 3 of question number 2, which says log with base 5 b square, and this dot basically means multiply. Okay, इस डॉट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई है हो रहा है, ठीक है. एंड log with base a 5 cube. Okay, so first of all, सबसे पहले तो हम जो इसकी पावर रूल है, पावर रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है. ये वाली पावर भी log से पहले शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली पावर भी log से पहले शिफ्ट हो जाएगी. सो विल राइट इट लाइक दिस. ये 2 पहले आ जाएगा log से, log विद बेस 5, और यहाँ पे हमारे पास b, एंड डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, और ये वाला 3 भी पहले शिफ्ट हो जाएगा, एंड विल राइट इट लाइक दिस log बेस a 5, राइट. नाउ 3 and 2 will multiply each other and it will become 2 3s are 6, right? यहाँ पे 2 3s are 6 हो जाएगा. अब यहाँ पे आपके पास एक और प्रॉपर्टी आती है. इफ यू हैव डिफरेंट बेसिस, सो आप उसको उसके ऊपर रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है. सो यू हैव टू इंडिविजुअली अप्लाई अ रूल ओवर हियर, जिसको हम लोग बेस एक्सपेंशन कहते हैं. सो यहाँ पे आप क्या करोगे कि log 5b, सबसे पहले आप इसको इंडिविजुअली ओपन करोगे और इसको इंडिविजुअली आप एक्सपैंड करोगे. और उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि जो 6 है, इसको तो आप 6 तो आप बाहर मल्टीप्लाई हो ही रहा है. अब आपने इस नंबर को पहले इंडिविजुअली एक्सपैंड करना है और log बेस a 5 को इंडिविजुअली आपने एक्सपैंड करना है. और इसका ये क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले आपने log को b के साथ और log को बेस के साथ इंडिविजुअली लिखना होता है. log b, और इसको आपने डिवाइड करना होता है log 5 से, राइट. अब सिमिलरली आप इस वाले टर्म को एक्सपैंड करें. कैसे करेंगे आप? डिवाइड होगा ये, और log आपके पास न्यूमरेटर में भी आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा, राइट. अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी द मेन वन, द वैल्यू विच इज़ 5 ओवर हेयर, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो बेस में वैल्यू है विच इज़ a ओवर हेयर, वो आपके पास आएगी. इजी. इस तरीके से आपने इसको एक्सपैंड करना है. बेसिस की एक्सपेंशन इस तरीके से होगी. नाउ सी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है. log 5 एंड log 5 विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड यू आर लेफ्ट विद log b over log a, राइट. नाउ अगेन, अगर आप इसको दोबारा से इस फॉर्म में लेके आना चाहो तो आप कैसे लिखोगे इसको? log को एक दफ़ा लिखोगे एंड न्यूमरेटर में b है, सो यू राइट b ओवर हेयर, और डिनोमिनेटर में a है, तो मतलब a आपकी बेस बन जाएगी. सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट. ओके. ओके, नाउ लेट्स सी पार्ट 4. पार्ट 4 में आपके पास गिवन है 2 ln a. ln मीन्स नेचुरल लॉग. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट. फर्स्ट वी नीड टू अप्लाई पावर रूल ओवर हियर. लॉग और नेचुरल लॉग के लिए आपके पास सेम रूल अप्लाई होते हैं, ठीक है. सो सी, आपके पास नेचुरल लॉग से पहले 2 है, इट मीन्स 2 इज अ पावर ऑफ a. यहाँ पे भी आपके पास नेचुरल लॉग से पहले 3 है, सो इट मीन्स 3 इज अ पावर ऑफ b, एंड हेयर 4 इज अ पावर ऑफ c. सो जस्ट अप्लाई द पावर रूल एंड विल राइट लाइक दिस: ln a square plus ln b cube minus ln c4, right. Now these terms are the relationship between these two terms are positive, are addition. ये दोनों ऐड हो रही हैं. सो इसको अगर हम लोग यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं. सो विल राइट इट लाइक दिस: ln a square multiply b cube, right, and this will remain as it is. नाउ अब आपके पास नेगेटिव साइन आ रहे हैं, तो नेगेटिव साइन को हम क्वोशिएंट रूल में अप्लाई कर, क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड बना देंगे. सो ln को हम एक दफ़ा लिखेंगे एंड द फर्स्ट टर्म विल बिकम आवर न्यूमरेटर विच इज़ a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई b क्यूब, एंड माइनस का साइन डिवाइड में चेंज हो जाएगा, एंड द सेकेंड टर्म विल बिकम आवर डिनोमिनेटर. सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट. Okay, easy. So you just need to apply the properties and have to solve these type of the questions. Okay, so now see,
question number 3, which says expand the following using the laws of logarithm. It is also very similar to the question number 2. You just need to expand it, okay, by using these law, the product rule, the product law, quotient law, power law, okay. So let's see how we can do it. The question number 3, the part A of question number 3 is log 11 over 5. So we can apply a quotient rule over here, right? Since quotient rule, by using quotient rule, we can write it like this. log को हमने सबसे पहले individually इनके साथ लिखना है, हर नंबर के साथ, और एंड दिस डिवाइड साइन विल चेंज इनटू अ नेगेटिव वन. सिंपल, दैट्स इट. ओके, आपने सिर्फ इसको एक्सपेंड करना है, इसको आगे आपने मतलब लाइक या ये सोल्व भी नहीं हो सकता है, ठीक है. तो बस यहाँ पे आपने इसको यहाँ तक ही करना होगा. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो आपके पास क्या अप्लाई हो रहा होगा? पावर रूल. गुड. ओके, सबसे पहले तो पावर रूल अप्लाई होगी. आपके पास पावर log से पहले चली जाएगी. सो यू राइट इट लाइक दिस 1/9 log एक्स वाई ओवर जी. राइट. अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि 1/9 विल रिमेन एज इट इज. अब आपने इस log को शिफ्ट करना होगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले नंबर के साथ. सबसे पहले आप लिखोगे log एक्स वाई, और जो डिवाइड का साइन होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? माइनस के साइन में, एंड log c. राइट. अब आप देखो कि जो x और y का आपस में रिलेशन है वो क्या है? दे आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर. सो यहाँ पे अगेन आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो, एंड यू कैन राइट इट लाइक दिस log x एंड log y, और इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन था, सो इट विल कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव वन एंड माइनस log c. So this is how you can expand this expression, okay? Now see part 3 of this question, where ln cube root of 16 x cube is given. So let's see how we can solve it. First of all, you need to write it in an exponential form. So 16 का आप पहले factors बना लो. 16 को आप कैसे लिख सकते हो? You can write it like this. Let me just find the factors. 2 8 the 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, and 2 1s are 2, right? 2 power 4, right? So you write it like this, 2 power 4 x cube, और आप यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखोगे? 1/3. स्क्वायर रूट को अगर आपने ये रेडिकल फॉर्म में भी लिखा हुआ है तो आपने इसको अगर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. सो यू राइट इट लाइक दिस 1/3, राइट? ओके, नाउ 1/3 इज एक्चुअली अ पावर ऑफ 2 एंड अ पावर ऑफ x, राइट? सो आप इसको स्प्लिट करो सबसे पहले पावर्स को. सो यू राइट इट लाइक दिस ln 2 power 4 1/3 मल्टीप्लाई x क्यूब 1/3. ओके, सो अब यहाँ पे जो ये वाली पावर है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे आपके पास यू आर लेफ्ट विथ 2 पावर 4/3 मल्टीप्लाई एक्स. नाउ अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, जिसमें आपने क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले log को इंडिविजुअली, नेचुरल log को आप इंडिविजुअली ईच टर्म के साथ लिखेंगे, एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव वन. दैट्स इट, दिस इज योर आंसर. ओके, एंड फर्दर you can solve it. Yeah, here is power is also over here, so you can apply a power rule also. Okay, so the power will shift before log, so you'll write it like this: 4/3 natural log 2 plus natural log x. That's it, this is your answer, final answer. Okay, now let's see part 4. Part 4 is given log with base 2 and power is 5, and the term is 1 minus a whole divided by b, right? So सबसे पहले आप power rule apply करोगे. This 5 will shift before log, and you'll write it like this: 5 log base 2 1 minus a over b. Okay, now what will be the next step? You need to apply a quotient rule, right? ये divide हो रहा है तो आपने इसको quotient rule यहाँ पे apply करना होगा, and you'll apply it like this. सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि न्यूमिनेटर लिखना होगा, न्यूमिनेटर के साथ भी log को आपने लिखना होगा, और डिनोमिनेटर के साथ भी, राइट? एंड दिस bar will change into a negative sign. Okay, so that's it, this is your answer. Okay, easy. आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज को यूज करना है और आपने एक्सपैंड करना है इनको, ठीक है? जस्ट कीप these key facts in your mind to solve these type of questions. Now let's see question number 4, in which you, after applying the properties, you need to evaluate also to find the unknown value. Okay, so let's see part 1 of question number 4, which says log 2 plus log x equals 1. Okay, so first of all, we'll apply a product rule over here, so we can change it like this. We'll write log single time, and 2 and x will multiply each other. The positive sign will change into multiply. Okay, and 1 as it is. Okay, so now we can write it like this: log 2x equals 1.
Okay, so to solve it further we need the log on both sides, right? हमें log दोनों sides पे चाहिए होगा। तो अब यहाँ पे तो आपके पास log है, तो अब यहाँ पे हम log को कैसे लेके आए? अब अगर आप की फैक्ट्स पे जाएं दोबारा से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था, तो आपके पास जो 1 होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है आपके पास log 10 के, राइट? log 10 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1, सो आप यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर सकते हैं log 10 से, राइट? सो यू विल राइट इट लाइक दिस, log 2x will remain as it is and 1 की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे log 10 because it is actually equals to 1. Now the log on both sides will cancel out each other and you're left with 2x equals 10. And now you want to find the value of x, so 2 will shift on the right hand side and it will divide 10, so you'll write it like this, 10 divided by 2, and it will cancel out each other and you'll get the value of x equals 5. Okay, so सबसे पहले आपने किया, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया और 1 की जगह पे आपने log 10 लिखा और ये वाला जो log है बोथ साइड पे कैंसिल आउट हो गया and you are left with just values which is 2x equals 10. And now you want to find the value of x over here, so you'll shift the 2 on the right hand side and it will divide 10 and you'll get the value of x equals 5. Okay, now see how we can solve the part 2 of this question. So it actually say log with base 2 x plus log with base 2 8 equals 5. So the first step would be to apply a product rule, right? Because the bases are same, so we can apply it over here. So log 2 and x and 8 will multiply each other because we are applying the product rule and the positive sign will convert into a multiply sign, right? So I'll write it like this, 8 into x, which is 8x equals 5. Okay, so it's an equation, so we don't need to write the equal sign before starting our equation. Okay, okay, now 8, it's 8, right? um it's log with base 2, so how should I write? Okay, I also want a log with same base 2 on the right hand side. Okay, right? So how we can write it like this, the left hand side will remain as it is. If you notice, with 5 there is 1, right? 5 multiply 1 is actually a 5, so we need to change this 5 over here, so we'll change it like this, log 2 8x equals 5 multiply. Okay, now the fact is, you can say, teacher, we can write log, we can replace the 1 by log 10. Okay, but this is not a correct criteria over here, because on the left hand side, if you notice, there is a log with base 2, but if we replace this 1 by log 10, so we just get log with base 1. Okay, so which is not correct, so we actually want a log with base 2. ओके, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे log with base 2. अब यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि हमारे पास दोबारा से आंसर 1 आ जाए? सो इफ यू सी द फैक्ट्स, आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर आपके पास बेस सेम हो और वैल्यू भी सेम हो तो आपके पास आंसर हमेशा 1 आता है, राइट? तो जो आपके पास बेस है वही आपके पास वैल्यू होगी, तो आपके पास आंसर 1 आएगा, राइट? सो आप यहाँ पे भी क्या लिखोगे? 2. सो इट मीन्स एक्चुअली कि ये वाली जो पूरी टर्म है, दिस इज योर 1. ओके, नाउ अब आपके पास राइट हैंड साइड पे भी लोग है और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी लोग है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, log 8x इक्वल्स टू, अच्छा ये जो 5 है ये log से पहले है, तो इट मीन्स 5 इज अ पावर ऑफ 2, सो यू राइट इट लाइक दिस, log with base 2 and 2 power 5, right? Now these log will cancel out each other and you left with 8x equals 2 power 5. Now you know what is 2 power 5, it's 32. Good. And now you want to find the value of x, so 8 will shift out on the right hand side and it will divide 32. So 32 divided by 8 is actually equals to 4. So the value of your x is 4. Okay, so you are using just your key facts and your rules to so evaluating these equations. Okay, now see question number 3, which is about 81 power x equals 243 power x plus 2. Okay, so let's factorize the 243 first. 243, it will go on table 3, so it will 81 and then 3 27s are 81 and then 3 9s are 27 and 3 3s are 9, right? And then 3 1s are 3, so we can replace 243 by 3 power 5.
और यहाँ पे आपके पास होल पावर क्या है, x प्लस टू विच विल रिमेन एज इट इज, राइट। एंड 81 के भी फैक्टर आपके पास यहीं पे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सो इट मीन्स 81 का फैक्टर आप कैसे लिख सकते हो, 3 पावर 4, राइट। और आपके पास पावर क्या गिवन है, होल पावर x। ओके, सो नाउ सी how we can further solve it. The powers are multiplying each other, right? ये वाली पावर भी मल्टीप्लाई हो रही है एंड दिस पावर इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग, तो आप इस पावर को मल्टीप्लाई कर दो। 3 पावर 4x इक्वल्स 3 पावर, दिस 5 इज एक्चुअली मल्टीप्लाइंग विद x एंड 2 बोथ, ओके। सो 5 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 5x, एंड जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 5 2 10, okay। Now the bases are same, so the rule is if the bases are same, so the powers will be equal to each other, okay। So bases आपके पास cancel हो जाएंगे, you are left with just powers and you'll write it like this, 4x equals 5x plus 10, okay। So now just rearrange it, shift 5x on the left hand side, 4x minus 5x equals 10, and if you subtract this you'll get minus x equals 10, and we want our unknown value is positive, so we'll shift the negative sign over here, okay। So we'll get x equals minus 10 as our value, okay, easy। Now see question number 4 of this part 4 of this question, which is about 1 over 27 whole power x minus 6 equals 27. So it's also very easy. What you need to do is simply shift 27 onto the numerator, okay। So the power of 27 over here is positive. If I shift it on the numerator, so it will become negative, okay। So we'll write it like this, 27 power minus 1, राइट, और होल पावर आपके पास ऑलरेडी गिवन है विच इज x माइनस 6, एंड दिस 27 विल रिमेन एज इट इज, और यहाँ पे 27 की पावर क्या है, 1 है, राइट। अब ये वाली जो -1 पावर है ये आपके पास जो बाहर वाली पावर गिवन है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ये जो -1 है ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 27 माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल्स 27 पावर 1। नाउ अगेन द बेसिस आर सेम, सो द पावर्स विल equal to each other, so we'll write it like this, x plus 6 equals 1, and we want to find the value of minus x, so we'll shift the 6 on the right hand side, you'll get 1 minus 6 minus x equals 1 minus 6 is basically equals to -5, and this negative sign will cancel out each other and the final value of the x will be 5, okay, easy। इसमें तो सिर्फ आपने एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि like if the bases are same so the powers are equal to each other। Now let's see another question which is about log of 5x minus 10 equals 2, okay। Now you need a log on the right hand side also। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है it will remain as it is, right। Solve it with me, okay। Now 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 जा 2 अगेन हो जाता है, तो अब हमें इस 1 को कन्वर्ट करना होगा, एंड हाउ वी कैन राइट इट, या एग्जैक्टली वी कैन कन्वर्ट इट इनटू log 10, very good, right। So and now the 2 is before log, so it means 2 is a power of 10, so you'll write it like this, log 5x minus 10 equals log 10 square, right। So now this log will cancel out each other and you're left with 5x minus 10 equals 10 square, which is actually equals to 100. Now shift minus 10 onto the right hand side, so it will become like 100 plus 10, and we'll get 110 over here, and we want to find the value of x, so we'll shift 5 onto the right hand side and it will divide 110, and if we divide 110 by 5, so we'll get x equals 22, right। So this will be our final answer for part 5 of question number 4. Okay, so today we did question number 2, 3, and 4. In question number 2 and 3, we just learned how we can apply the properties. And in question number 4, we apply the properties and also evaluate the equations, right? So this is how you can solve these questions.
Okay, so question number 5 of this exercise is basically about like you can use the different laws which we just learned, the quotient product and the power rule, and then you can use the logarithm table to find the to evaluate the value. Okay, so try the question number 5 to do. If you like get confused anywhere, so you may ask any question. Okay, so now let's see question number 6. There are three questions left with on in this exercise, which is question number 6, 7, and it's actually a work problem. So question number 6 about the formula to measure the magnitude of earthquake is given by m equals log with base 10 into a over a naught. If amplitude a is given and amplitude a naught is also given, which is 10. So we actually want to find the magnitude of our earthquake. So let's see how we can solve it. First we'll write the magnitude of our earthquake, which is given m log with base 10 and a over a naught. Okay, so now apply substitute the value of a and a naught. The value of a is given in the question, which is 10,000, and the a naught value is given, which is 10. So just substitute the value and you'll get 10,000 divided by 10, right? And now this 0 will cancel out this one. So you're left with m equals log with base 10 and 1,000. And how we can write the 1,000? Like if I factorize it, so we can write it like this: 10 cube, right? So 10 cube is basically equals to 1,000. Now apply the power rule. So this power 3 will shift before log. So we can write it like this: m equals 3 log with base 10 of 10, right? Now we know, okay, if the bases and the values are same, यहाँ पे बेस भी 10 है, वैल्यू भी सेम है, सो दिस बेसिकली इक्वल्स टू 1, राइट? यहाँ पे हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास log a सेम होता है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट 1 पुट कर देते हैं. So just apply this property and we can write it like this: 3 into 1 and m will be 3. Okay, so this is our answer for question number 6. Easy. Now see question number 7. Question number 7 is Abdullah invested rupees 100,000 in a saving scheme and gains interest at the rate of 5%. Okay, तो सबसे पहले तो उसने इन्वेस्टमेंट की है, तो हम लिख लेते हैं कि उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है. इन्वेस्टमेंट, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? ₹100,000. ओके, देन हमारे पास गिवन ये है कि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है एट द रेट ऑफ 5%. सो रेट इज गिवन विच इज 5%. ओके, and then so that the total value of this investment after t years is y. This is modeled by an equation this. So this equation is given which we need to find the number of the years. Okay, कि उसने कितनी years उसने investment की कि उसकी जो amount है वो double हो गई. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास given है कि उसकी जो amount है वो भी double हो रही है. ठीक है, तो हम उसको represent करेंगे, double investment of year को हम y से represent करेंगे, और अगर हम इस amount को double करते हैं, so we'll get 200,000, right? Okay, so this is given actually, and now we need to find a time, t for time. Okay, and the equation given is this. We can use this equation to find out our time. So just since the equation given is y equals 100,000 into 1.05 raised to power t. Okay, so we can use this equation to find the value of t. And first of all, let's just substitute what we have. Like y की जगह पे हम substitute कर सकते हैं 200,000, right? Okay, so just substitute 200,000 in place of y, and the right hand side will remain as it is. Okay, now see what we can do. हम 100,000 को left hand side पे shift कर देते हैं, so it will divide 200,000, and on the right hand side we are left with 1.05 power t, right? If I divide it, तो आपके पास ये सारे जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यू आर जस्ट लेफ्ट विथ 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1.05 ऑन टी. नाउ आपने नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग टी. अब आप इसको कैसे कर सकते हो? यू
नीड टू टेक अ log ऑन बोथ साइड, ठीक है, सो दैट ये जो पावर है आप इसको समहाउ किसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड वो मतलब लाइक यहाँ पे ले आओ इस प्लेस पे, और आप फिर इसको सिंप्लीफाई कर सको. सो यू राइट इट लाइक दिस, टेकिंग log on both sides. ओके, तो यहाँ पे हम ले लेंगे log 2 इक्वल्स log 1.05 nt, राइट. तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि ये जो t है ये इट इज़ अ पावर, सो log की प्रॉपर्टी क्या होती है पावर रूल में, इट विल शिफ्ट बिफोर log. तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो log 2 विल रिमेन एज इट इज, और यहाँ पे पावर शिफ्ट करेंगे, सो t log 1.05. Okay, now you can use your calculator or the log table to find the log of 10.5 and the log of 2. Okay, आप कैलकुलेटर में आपके पास एक की होगी log की, तो आपने जस्ट उसको log को प्रेस करना होगा और 2 टाइप करना होगा, देन और इक्वल का साइन, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी. ओके, और else you can also use the logarithm table also. So if you take the log of 2 you'll get 0.3010 equals to t, और t मल्टीप्लाई बाय log 1.05 अगर आप लोगे you'll get 0.0212. Okay, now you want to find the t over here, so you'll shift this value onto the left hand side and it will divide 0.3010. तो जस्ट आप इसको सिंपली शिफ्ट करो और अपने कैलकुलेटर में इसको आप सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, इसको डिवाइड करो, तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी t इक्वल्स 14 years. Okay, so this will be your final answer for question number 7. Okay, cool. Now see question number 8. Question number 8 में आपके पास given है Huria is hiking up a mountain where the temperature T decreases by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meters gain in altitude. The initial temperature is given. So just gather the info which is given. So the initial temperature is given, which is denoted by Ti, which is 20 degree Celsius. Okay, and the altitude at this temperature is given, which is represented by h, and it is 500 meters. Okay, and we need to find the final temperature, which will denote it by capital T, and we need to find it. Okay, and the expression is given. We can use this expression to find the final temperature. So just write this final expression, which is given T equals Ti multiply 0.97 पावर आपके पास गिवन है h over 100. ओके, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ h विच इज गिवन 500, तो h की जगह पे आपने 500 पुट कर देना, और ti की जगह पे आपने 20 पुट कर देना, राइट. सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, so you'll get 20 multiply 0.97, h की जगह पे आप 500 and it's 500 divided by 100, and इस जीरो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, and you'll get 20 multiply 0.97 power 5. Okay, now what you need to do is you have to take the log on both sides. Okay, तो अब आप यहाँ पे log लेंगे, taking log on both sides, multiply 0.97 power 5. Okay, so now I want you to complete this question by using the property and your calculator or logarithm table and tell me the final answer. Okay, so it will be your homework, do it yourself. So you just simply have to apply the product rule over here and calculate the value and tell me the answer. Okay, so this was our exercise 2.4, which is now complete. So if you have any question relevant to it, do let me know in the comment section. So till then, practice it well. Take care. Allah Hafiz.